So hello my dear students, I hope you all are doing well. In today's lecture, we are going to start with refraction of light through a prism. Okay. So in our previous classes, we have learned about the rectangular glass slab, right? How we are able to see between these two parallel surfaces, the refraction is occurring, right? First surface, right? Let's name it A, B. So this is our first refracting surface on which the refraction is occurring. Incident light is coming, normal angle of incidence, right? Now it is the rarer medium and light is going in the denser medium, so it will move towards the normal and we will see the refraction. Now second surface, we'll name it as CD, right? Now on the CD surface you will see the light is going from denser medium to rarer medium, so it will move away from the normal, and this ray is known as emergent ray. Okay, if you see the original path of the incident ray and the new path of the emergent ray, they are at the same angle, so there is no angular deviation or angular displacement. There is lateral displacement. मतलब जा उसी रास्ते पर रही है बट थोड़ा सा साइड होकर, ठीक है? It is going with the same angle only but on the different path. Okay, why? Because we had two parallel surfaces from which the refraction was occurring, but now there is different story in case of prism. However, it is a slightly displaced lateral. How about light reflected through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular surfaces. These surfaces are inclined to each other. These rectangular surfaces are inclined to each other. Okay. The angle between its two lateral faces is called the angle of prism. This angle will be known as angle of prism. Let us know how to do an activity to study the refraction of light through a triangular prism. So what they are saying, we have two triangular faces and three rectangular bases. 1, 2 and the bottom one 3, right? These two faces are inclined with each other and this angle is known as angle of prism. This phase is known as, because at this phase the first refraction will occur, so it is phase 1, and at this phase the second refraction will occur, that's why it is known as phase 2. So we have two rectangular faces and three rectangular faces. Okay, so what they are saying here that the refraction through a glass slab is different from that of the prism. Why? Because refraction through the glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray, right? There is no angular deviation. But in refraction through a glass prism, the emergent ray is not parallel to that of the incident ray. अगर इंसिडेंट रे का पाथ फॉर सपोज ऐसा होगा तो यहाँ पर हमको इमर्जेंट रे इस तरीके से दिखाई देगी. इट इज नॉट पैरेलल. Okay, it is going to some different direction. So emergent ray is deviated from its original direction. यहाँ पर डायरेक्शन हो सकता है पाथ चेंज हो, लेकिन डायरेक्शन सेम होती है इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब. लेकिन यहाँ पे इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वाज दिस and the direction of emergent ray is this. So they are on both different directions. ठीक है? This change in direction causes their deviation, और जो angle बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? Angle of deviation. ठीक है? अब देखो, this is your front face. These are the two faces जहां पर refraction होगा. ठीक है? अब हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ना करके हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. अब यहाँ पर देखो, वी हैव अ प्रिज्म. अब यहाँ पे दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज द इंसिडेंट लाइट ए बी. ठीक है, इंसिडेंट लाइट ए बी. यहाँ पे नॉर्मल है एन एन डैश. लाइट का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए. दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ आवर इंसिडेंट लाइट. लेकिन सिंस वी आर गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इन द प्रिज्म, so light will move
towards the normal, right? So light यहाँ से refract हुई और next surface पर चली गई. Next surface पर जाने के बाद again you will see it is going from denser medium to rarer medium. So it will go away from the normal. If this is the normal, it is going away from the normal. Now this ray is known as emergent ray. अब again जब मैं इसको extend करती हूँ backwards, so you will see इसका original direction was supposed to be this, but it is deviated to the different direction, and that is why we have a deviation. ये जो angle है ये क्या हुआ? Angle of deviation represented by this sign known as delta. Okay, so here AB is the incident ray and CD is the emergent ray. I hope this diagram is clear to you all. Okay, chalo. So what is happening? When a ray of light passes through a prism, it bends towards the base. ठीक है, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन थोड़ा और बेस की तरफ गया और यहाँ पे इमर्जेंट रे थोड़ा और बेस की तरफ गई. So what we can conclude that when a ray of light passes through a prism, it bends towards the thicker part of the prism. Okay, it bent towards the thicker part of the prism. ये line important है because when we'll understand the recombination of prism, this line will make it easy to understand that logic. Okay. Angle of deviation. The angle of deviation is the angle between incident ray and emergent ray. Dispersion of light. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हमने समझ लिया. जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे था उसके बीच का जो एंगल है दैट इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, नाउ कमिंग टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, एक बार पहले एनसीईआरटी को कर लेते हैं. सो दिस इज द सेम डायग्राम एज वी हैव ड्रॉन राइट नाउ. दिस इज योर इमर्जेंट रे. अभी एक्टिविटी कैसे की है, यहाँ पे यू हैव पुट द नील्स, राइट, एंड दूसरे साइड से आप देख रहे हो. आफ्टर दैट ड्रॉ अ स्ट्रेट, ट्रेस द आउटलाइन. नाउ जो प्रिज्म रखा हुआ है उसके ऊपर ही आप क्या करोगे, उसको मींस प्रिज्म रखा है एंड देन उसको ट्रेस करोगे, उसकी शेप को ट्रेस करोगे, राइट. देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन एंड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ द प्रिज्म. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने प्रिज्म रखा, उसको पेंसिल से उसके बाउंड्रीज के थ्रू उसको हमने ट्रेस कर लिया. ठीक है, फिर एक लाइन बनाई दैट इज PE विच इज समवेयर इंक्लाइंड, ऑब्लिक है, इंक्लाइंड है ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, राइट. Then what they are saying, fix two pins say at P and Q on the line PE as shown in the figure. So हमने यहाँ पर दो पिन्स लगा दिए. Pin 1 is Q, pin 2 is P and the other one is Q, like this. ठीक है, this is our P and this is our Q. क्लियर हो गया. यहाँ पे हमने नॉर्मल भी अपना ड्रॉ कर रखा है. क्लियर. नाउ वी विल सी दैट look for the images of the pins fixed at PQ through the other face AC. Means this is our AB. यहाँ से तो हमें इंसिडेंट होगा, फिर हमें यहाँ कहीं हमको इमर्जेंट मिलेगा. सो वी हैव टू गो ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म. यहाँ की साइड से कहीं यहाँ पर यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एंड ट्राई करना कि एक आंख बंद करके क्लोज योर वन आई एंड सी इट फ्रॉम द अदर आई, ताकि पैरालेक्स ना हो, मतलब आप एक्यूरेट अपनी पोजीशन देख पाओ. सो आपको एक ऐसी विजिबिलिटी मिलेगी, जहां ये विजिबिलिटी मिले वहां पर आपको ये दो पिन्स लगा देनी है, राइट. इस तरीके से कि ये सारे सिंगल लाइन में आपको दिखे, मतलब आपको एक तरीके से ग्रीन अब दिखना बंद हो जाए क्योंकि येलो ने उसको ओवरशैडो कर लिया है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए. क्लियर. जब ऊपर से देखोगे आपको ये जो सेटअप है वो इस तरीके से दिखाई देगा. Now let us understand what they are trying to say. अब हमने पिन्स लगा दिए दूसरे साइड. रिमूव द पिन्स ऑफ द ग्लास, क्योंकि वहां पे अब डॉट आ गया होगा, द एम्बॉसमेंट हो गया होगा. द लाइन PE meets the boundary of the prism at point E, right. The similarly joins and produces the point R and S. ऐसे ही यहाँ पर भी आप इमर्जेंट रे बना लो. Let these line meet the boundary of the prism E and F. अब यहाँ पर ये E और F को भी ज्वाइन कर दो. So now
हमने क्या किया, यहाँ पर हमको लेट्स से इधर और इधर मुझे P डैश और Q डैश दिखे। सो मैंने यहाँ से एक रे बनाया, इमर्जेंट रे, राइट, दैट इज फॉर P डैश एंड Q डैश। ये था E पॉइंट, ये था F पॉइंट। मैंने क्या किया, E और F पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द ज्वाइनिंग ऑफ E एंड F पॉइंट, राइट। यहाँ पे हमने नॉर्मल्स भी ड्रॉ किए थे, करेक्ट। यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, राइट। इफ यू सी, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वॉज सपोज टू बी माई ओरिजिनल पाथ, right? And this is my emergent path if I am extending it backward. तो ये क्या हुआ मेरा angle of deviation. This is the angle of prism, right? So यहाँ पर draw the perpendiculars of the refracting surfaces, right? AB and AC of the prism E and F respectively. Mark angle of incidence I and angle of emergence E, right? After that you will see here PE is the incident ray, EF is the refracted ray and Fs is the emergent ray. You may note that a ray of light entering from the air, that is a rarer medium, it bends towards the normal because it is going in the denser medium, right? Compare the angle of incidence and angle of refraction of each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending occurs in the glass slab? No. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray, means towards the base. This angle is called the angle of deviation. In this case, angle of deviation is the angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and you can measure it. So what you have to do in your activity, you have to measure angle of incidence, angle of emergence, and then angle of deviation, and that's how your activity is finished. I hope it helps you to understand how this activity is performed. Clear? Okay. So we are done with the refraction of light through a prism, and now we'll start with the topic, that is refraction of white light by a glass. So you must have seen and appreciated the spectacular colors in the rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow, right? What are those colors? V, I, B, G, Y, O, R. Correct? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction through the prism. The inclined refracting surfaces of the glass prism show exciting phenomena. Let us find it out through an activity. Again, you have to do the same thing, that is, you have to take a thick sheet of cardboard and make a small hole or a narrow slit in the middle of it. Allow the sunlight to fall on the narrow slit, gives the narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the white light from the slit to fall on the faces of the prism. Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on the nearby screen. What do you observe? You will find the beautiful band of colors. And why does this happen? Okay. So what is happening here now? Okay. So in this activity, what you have done, let's say this is your source of light, This is the source of light coming, sunlight is coming. And what we have done, we have taken a thick cardboard and made a slit in it. Okay. After that, we have put a prism near it and then allowing the white light from the sun, because the beam was coming from the sun. Now this beam has turned into the light, right? Now very thin light, an incident light. Now what will happen? You have to adjust it so that it casts a pattern on the screen that you have kept here. This is the white color screen and you will see a different kind of pattern on the screen. Now we'll understand what is happening. Yes. So in 1665, Newton performed this experiment
that he incidented the white light. Similarly, the slit was there, sunlight was coming, and he incidented the light. To his surprise, he saw that this white light is splitting into 7 colors. Okay. Now, this splitting of light into 7 colors is known as dispersion, and the pattern you achieve on the screen is known as spectrum. So the band of 7 colors formed on white screen when a beam of light is passed through a glass prism is called spectrum of white light. What is that spectrum of white light? That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So VIBGYOR, Vibgyor is the pattern that you will see. Up, he performed this activity many times and making different angles. ठीक है, लेकिन always he was getting this order only, VIBGYOR, VIBGYOR. There was no difference कि ऐसे नहीं कि कभी orange नीचे आ रहा हो, कभी green ऊपर आ रहा हो. No, this was always violet was one at the bottom and red was at the top, and the colors between were also in the same order. So he wanted to study what was happening, why is this happening, right? So dispersion of white light, splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium, that is a glass prism, is called the dispersion of light. So splitting of colors is dispersion, and obtaining them the pattern of 7 colors, obtaining them on the screen, the pattern we got is the spectrum of the white light. So conclusion we got was the formation of spectrum of 7 colors shows that white light is made up of 7 colors. White light सिर्फ white light नहीं, it is actually the combination of 7 colors. Okay? अब ऐसा होता क्यों है कि white color में disperse हो क्यों रही है? So when white light vacuum में और air में सेम ही स्पीड से चलती है, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is speed of light. Okay, now हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मतलब डिफरेंट वेव्स है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो एक्टिव. ठीक है, अब ये यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में एक रीजन ऐसा आता है जो हमारी आईज को दिखता है, विजिबल रीजन, मतलब जो वेव्स यहाँ पर ट्रैवल करती हैं वो हमारी आईज को दिखती हैं, हमारी आईज के जो सेल्स हैं वो उनको रिसीव करते हैं, वो उनके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं. गामा रेज को नहीं हम देख सकते, एक्स रेज को नहीं देख सकते, यूवी रेज को नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेज को, माइक्रो रेज को और रेडियो वेव्स को हम नहीं देख सकते. There is one more thing, that as we go from gamma rays to radio waves, the wavelength is increasing. Now what is wavelength? Okay, if this is the graph of a wave or a propagation graph of a wave, okay, so if you will see that there are 2 kinds of waves running here, one wave and you will see second wave. Okay, so distance between 2 consecutive peaks, and these peaks are known as crest. The bottom one will known as trough. Okay, the distance between 2 consecutive crest or 2 consecutive trough is known as wave length of that particular wave. So this is wavelength A and this is wavelength B. This is also wavelength B, right? Either this or either this, दोनों का sum नहीं, ठीक है? Lambda B. So it is very much clear that lambda A is greater than lambda B. So that's how radio waves have more length and more wavelength and gamma rays have less wavelength. You can see here. So they have very small wavelength, whereas the radio waves have very large wavelength. Coming here, if we say from gamma rays, the radio waves have increasing wavelength. Therefore, our violet color will be having smallest or least wavelength among the Vibgyor, and red will be having maximum wavelength, right? Minimum wavelength and maximum wavelength. Okay. अब यहाँ पर मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज होगी, स्पीड ऑफ द वेव विल चेंज एंड wavelength of the wave will change or the light will change. But
मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, so if you see here that speed is equals to frequency into wavelength. अब frequency तो मेरी constant हो गई, so can we say that speed is directly proportional to wavelength, right? Speed is directly proportional to wavelength. ठीक है, अब जब एयर में वो सब किस स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो है जो व्हाइट लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती. इवन ये पूरा स्पेक्ट्रम, एवरी वेव इन दिस स्पेक्ट्रम वैक्यूम में और एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही चलते हैं. इसका मतलब वी भी उसी स्पीड से चलेगा, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी और रेड भी, ये सब सेम स्पीड से चलेंगे. इसीलिए एयर में या वैक्यूम में डिस्पर्जन हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सारे कलर्स सेम स्पीड से चल रहे हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. ठीक है, उस जो बेंडिंग है, हमने इमर्जेंट रहे बेंडिंग देखी है, तो ये बेंडिंग जो है किस पर डिपेंड करती है, दिस डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, द डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड. अब इनकी जब वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होगी इन डिफरेंट मीडियम, राइट? सो द डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, that therefore they are refracted or bent at different angles on passing through prism. Okay, now coming here, if you see, so violet और violet से red की तरफ जाते हुए अगर आप देखोगे, हमने देखा कि इसका wavelength minimum है, wavelength minimum है और red का wavelength maximum है, right? ऐसे ही अगर lambda is directly proportional to speed, so अगर इसका wavelength minimum है तो इसका speed भी minimum होगा. ऐसे ही इसका wavelength maximum है तो इसका speed भी maximum होगा from violet to red. अब अगर हमारा फॉर्मूला है that refractive index is equals to what? Refractive index is equals to C upon velocity in the medium, right? So refractive index is inversely proportional to the velocity in the medium. ठीक है, तो जिसका velocity minimum उसका refractive index maximum. So among them वायलेट वेव का, वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मिनिमम होगा. और सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का मैक्सिमम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का मिनिमम होगा. करेक्ट. अब देयर इज वन मोर रिलेशन दैट जिसका स्पीड कम मीन्स speed is inversely proportional to deviation, or we can say that refractive index is directly proportional to deviation. ठीक है, तो जिसका स्पीड कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी सबसे ज्यादा. तो अगर वायलेट का स्पीड मिनिमम है, राइट, तो उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा, राइट. ऐसे ही अगर रेड का स्पीड मैक्सिमम है तो उसका डेविएशन मिनिमम होगा. क्लियर. यहाँ पर आ जाते हैं, देखो अगर मैं वायलेट कलर का डेविएशन देखती हूँ, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट, राइट. और अगर मैं रेड का डेविएशन देखती हूँ तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड. तो यू कैन क्लियरली सी किसका डेविएशन ज्यादा है, वायलेट का ज्यादा है, राइट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका वेलोसिटी मिनिमम है, तो इसका डेविएशन भी मैक्सिमम होगा. ज्यादा डेविएट हुई है, जाना इधर था ये तो बिल्कुल ही इधर चली गई है ना, बहुत ज्यादा डेविएशन है. रेड के केस में क्या हुआ, जाना इधर था, थोड़ा सा डेविएट हुआ है. वायलेट तो पूरा ही डेविएट हो गया. समझ गए. दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट पाथ. ये हमारा रेड का पाथ और ये वायलेट का पाथ. यू कैन इजीली सी कि कौन ज्यादा डेविएट हुआ है पाथ से. क्लियर. ओके, so you can understand it here now that the different colors in the spectrum of light have different wavelengths, right? अगर हम V से R तक जाते हैं तो different different wavelength हैं. Therefore, the speed with which they all bend varies
डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। The violet bends the most, deviates the most, having shortest wavelength, minimum wavelength, and red bends the least, having longest wavelength. I hope it is clear. चलो एक बार इसको read कर लेते हैं that dispersion of white light by a glass prism. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. Right before we wake up, we completed this activity. Now, the prism has probably splits into incident white light into band of colors. Note that colors that appears at the two ends of the color band. What is the sequence? Sequence is always same VIBGY right? The band of colored components of a light beam is called spectrum that we have studied. So the splitting of light into its component colors is called dispersion. White light is dispersed into 7 colors component by the prism. Different colors of light bend through different angles with respect to incident ray as they pass through the prism. The red light bends least while the violet most because the rays of color emerge along with different paths become distinct. अलग अलग हो जाएंगे. It is the band of distinct colors we see as the spectrum of light. Clear? Now Isaac Newton was the first one to use the glass of prism to obtain the spectrum, as I told you. He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म से इतना ज्यादा स्प्लिट हो रहा है, मैं एक और प्रिज्म लगा देता हूँ और फिर और ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, राइट। और उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में आइडेंटिकल प्रिज्म ही लिया लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में, राइट। एंड यू कैन क्लियरली सी, जैसे हमने आज ही पढ़ा था कि ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स द थिकनेस, राइट, टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में। अब इसके बारे में रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। So students, I really hope you like this session. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section, and I will also add the link for my Telegram group and channel where you will get all the required PDFs regarding your syllabus. And please do like, subscribe, share and comment. Hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.